Hello and welcome. India and the world is in an unprecedented crisis. We had not even fully recovered from the first when the second wave of COVID-19 hit us. Hit us hard. The virus now more contagious, more virulent. It's adapting and so far surviving in its fight against you and I. Our response needs to adapt as well. And it is this response that we at NDTV hope to get with a full day dedicated to solutions. Welcome to the NDTV Solutions. Through the day today, we will have chief ministers, health ministers, top doctors, bureaucrats in the country speak up their mind on what lies ahead and how to beat the COVID-19 pandemic. I'm Sonal Mehrotra Kapoor, and we start our solutions today with two states, both completely in the clutches of the virus as we speak. The situation is dire, and taking us through the solutions here, both in Delhi and Karnataka, is the Health Minister for Delhi, Satyendra Jain, and the Deputy Chief Minister for Karnataka, Dr. Ashwath Narayan. Thank you both for your time. We understand these are trying times where you are required to be helping in and answering crisis calls all the time. So appreciate you sharing some of that with us today. Let me begin by bringing in the Health Minister for Delhi, Dr. Satyendra Jain. डॉक्टर जैन, आपसे समझना चाहूंगी पहले, बहुत ही परेशानी भरा समय है, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है सरकार के लिए, लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए. इमीडिएटली आपको क्या सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए? बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे जो पॉजिटिविटी है और जो लोग नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं. सोचना भी मुश्किल था कि इतने नंबर जाएंगे. कल दिल्ली में 24,375 केसेस थे, आज भी लगभग इतने ही केस आने वाले हैं. तो 25,000 के करीब केस एक दिन में आना, जो कि पिछले 3-4 महीने में भी इतने केस नहीं आए थे, उतने केसेस एक दिन में आ रहे हैं. तो सिचुएशन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ग्रिम है. जो सोल्यूशन नजर आता है, इसमें 3-4 सॉल्यूशंस हैं. हमने देखो, पहले तो मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर पिछले 10 दिन में हमने बेड की संख्या 6,000 से बढ़ाकर हमने 17,000 की है. बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया है, बट उसके बावजूद भी ऑक्यूपेंसी इज टू हाई. मतलब ऐसा हो रहा है कि डेली हम 1,000-1,500 बेड बढ़ाते हैं, 1,000-1,500 ऑक्यूपाई हो जाते हैं. तो जितने भी बेड हम बढ़ा रहे हैं वो तुरंत ऑक्यूपाई हो रहे हैं. इसमें देख तो ये है कि कम से कम उन लोगों को हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए जो लोग मतलब जिनको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. कई सारे लोग पॉजिटिव आए हैं तो पैनिक करते हैं, पैनिक करके सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं. वो दैट इज ए बेटर सोल्यूशन. बहुत सारे लोग, मैं खुद जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, कई लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी बेड चाहिए. 5 दिन पहले की बात है. तो मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डॉक्टर से कनेक्ट करा दिया मैंने और उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा, दे आर फाइन. तो हो क्या रहा है कि जो काफ़ी सारी संख्या में ऐसे लोग हैं कि वो घर पे रह सकते हैं. देखो, कोरोना के स्पेसिफिक दवाई तो कोई है नहीं अभी. सिम्टम्स के लिए जो भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है. तो फीवर का ध्यान रखने की ज़रूरत है. और कोरोना के अंदर 2 चीज़ें हैं, हवा है और पानी है. तो कई लोगों को क्या है कि डिहाइड्रेशन हो रही है. इसके अंदर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, ज़्यादा पानी नहीं पी रहे वो लोग. जिसको भी कोरोना है, पूरे दिन के अंदर कम से कम 4 लीटर लिक्विड पीना है अपने. पानी हो सकता है, नींबू की शिकंजी हो सकती है, नारियल पानी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं. कम से कम 3-4 लीटर जरूर लीजिएगा, वरना डिहाइड्रेशन होने से शरीर के अंदर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है. तो लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाइड्रेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं. दूसरा, मुझे तो लगता है थोड़ा जो पैनिक है उसको भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है. जो लोग पॉजिटिव हैं मान लो, या जिनके परिवार में पॉजिटिव है, उन सबको काम रहने की ज़रूरत है. इसके अंदर जितना भी हाइपर, जो हम इमोशनली हाइपर होते हैं, उसी तरह से जैसे शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, उसी तरह से इमोशनल आउटब्रेक इसके अंदर हैवॉक का काम करता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है. तो मुझे लगता है बहुत ही काम रहें. और देखो, हॉस्पिटल की जरूरत है तभी अस्पताल में जाएं, तब तक डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयां, मैक्सिमम दवाइयां घर पे चल सकते हैं. Follow protocol, take the advice of your doctor, keep yourself hydrated, ensure that you're taking your vitamins all the time, but don't just rush to the hospital straight up because they're already quite overburdened. Well, the situation in Delhi is quite peculiar, but the one in Karnataka also quite strange, many would say, and also alarming. And joining us is the Deputy Chief Minister from there. Dr. Ashwath Narayan, I just want to begin by asking you, Karnataka
has been sort of a hotspot state, has been one state which has shown a spike, has constantly been in the top 5 as well, both in the first wave and the second. Right now, looking at the solution or perhaps the condition at hand, what are the solutions that you have to offer? Most important, the numbers are definitely rising. In this background, already a lot of measures have been taken up, and to give a lot of protection to all the health workers, the frontline workers and the people above 45, already the vaccination has started. And that is working also in a very big way, trying to reach out to all the targeted category, and we have been very successful. Along with this, the people who have not been vaccinated are not covered under the vaccination. A big number of people are getting infected, and there's been a very challenging, very alarming situation in this direction. What we need to do is the most important, all of us, we need to detect the cases very early. See, detection of the cases early is very important. That, see, most of the people don't understand the symptoms. What is seen in the COVID-19 is the common symptoms, whatever regularly we keep getting. That is a common cold, running nose, or headache, or fever, myalgia, and the loss of smell. These are the kind of symptoms. The people don't think that it is COVID-19. This is a time where mostly it is related to COVID-19. If they go and get tested immediately, that will help a lot, and getting the results very fast. Get the results, start the treatment early. If you start the treatment early, nothing much is required. The hospitalization or the much more ICU, all this requirement doesn't arise. Early detection, early treatment, early test, this can help us a lot, and a follow-up and a proper follow-up can minimize, and it can be effectively managed, and the loss of life and all the shortages we can overcome and effectively manage and send a right signal to the people. In this direction, the state of Karnataka, we have been actively working and still working to strengthen and ensure. Strengthening is important. We are working, and whatever best in this given situation can be done in state of Karnataka, we have been doing extremely well, and we are trying still to scale up in much more bigger way. Right. In fact, the state of Maharashtra, Karnataka, beg your pardon, extremely crucial. The chief minister there got a COVID reinfection. We'll talk about that also in just a bit. But let me just go back to Dr. Satyendra Jain at this point. Satyendra ji, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि दिल्ली में इस समय अगर आप पूरी समस्या को देखें तो करीब 1000 केस 1 घंटे के एवरेज में आ रहे हैं. 160 डेथ्स हमने रिपोर्ट भी कर दी हैं. पॉजिटिविटी रेट इस समय दिल्ली का है 24%. WHO के हिसाब से 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए. हम अभी हैं 24% पर. हमने देखा दिल्ली सरकार को काफी काम करते हुए बेड्स वगैरह भी अटैच करे गए. आपने होटल के बेड्स बोला है यूज करेंगे, बैंक्वेट हॉल के बेड्स भी यूज करेंगे, लेकिन कंसर्न ये है कि आप बेड्स तो बढ़ा देंगे लेकिन आप हॉस्पिटल स्टाफ कैसे बढ़ाएंगे, और ये जगहें जो बढ़ाई जा रही हैं वहां की मॉनिटरिंग कैसी होगी? नहीं, जो बढ़ाई जा रही है वो किसी न किसी हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं. वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं है. जिसको होटल को हम जोड़ रहे हैं, बैंक्वेट हॉल को जोड़ रहे हैं, वो किसी हॉस्पिटल का पार्ट है. वो हॉस्पिटल ही उसको रन करेगा. और स्टाफ के लिए देखो बहुत बड़ा क्रंच है. उसके लिए हमने 4th ईयर 5th ईयर एंड स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को, सबको अलाउ कर दिया है. आयुष के जितने डॉक्टर्स हैं उनको भी एम्प्लॉय करने के लिए अलाउ किया है. इसके अलावा हमने डेंटल जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको भी सबको अलाउ किया है. हमने मतलब काफ़ी लोगों को अलाउ कर दिया कि इस पेंडेमिक में वो काम कर सकते हैं. तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को मैन पावर मिल जानी चाहिए. तो ये ऑलरेडी हम 1 हफ्ता पहले कर चुके हैं. तो आने वाले दिनों में हमें कुछ और लोग दिखने चाहिए यहाँ पर. ये कुछ अच्छी खबर निकल रही है इसमें से. लेट मी गो बैक टू डॉक्टर अश्वथ नारायण ओवर देयर. Dr. Narayan, we understand that in the past couple of days, Karnataka got in some fresh guidelines. You've also put a cap on the number of people who are gathering, people at weddings, people during cremations as well, religious gatherings as well. Now, at a time when there is more and more need perhaps to ensure that there is social distancing, and your government has taken that view as well. When you look at the pictures coming in from Kumbh, when you look at the election rallies being held at other places across the country,
What's the thought in your mind? So with regard to the increase in number in this time, probably it was unexpected, and the elections, since the elections were announced, this in the election have been announced, and the election commission has given the schedule to for the conduction of elections. So in this backdrop, we have got no other option to conduct election. So elections will go on. It was a decision of not our any government or anybody. It is a decision of the election commission to conduct election. Since they have announced, we have to comply and conduct elections. So this has been going on in various states. With regard to the state of Karnataka, the restrictions, a lot of restrictions and curbs have been brought in the state of Karnataka to ensure the safety and the social distancing or the whatever required measures need to be taken to protect themselves. And we are creating a lot of awareness among the people, and we are trying to scale up entire system to address the concern of the people. Most important, I would like to time and again, it is not just for Karnataka or anybody. It's for entire country and for the entire world. What we need to do is immediately going for early detection. Early test reports needs to be provided, and early treatment is most important, because there is no consensus with regard to the treatment line across the world. But time and again, some of the drugs have proved very effective, and the kind of scarcity, all this thing creation can be completely avoided. This can be simplified and effectively treated. We need to intervene very early. We need cooperation, participation from all the sides. If that is done, probably we can manage this entire situation everywhere very easily. So we need to do this. So in this direction, one side is the already escalated cases who have been getting admitted. The other side is in future. Do you have enough oxygen, enough beds at the moment to try and put this into action? Madam, that escalation only doesn't arise if you are able to manage in the early stages. The question of oxygenation, the question of ICU, the hospitalization doesn't arise. If we effectively things are done, early detection, if it can happen. See, there are three phases in this disease. The first is the infectious phase, where the multiplication happens and the people will not be aware. The second phase is where the symptoms, the symptoms are reflected or expressed. During that is the inflammation period. There we need to, once the symptoms are seen, immediately they need to get report immediately, get the test done. They need to get the report, then to start the treatment. There are most effective treatments are there. If that is done, probably the escalation, the cytokine storm and all doesn't arise. So in this direction, we need to start work. So that is the solution. See, where is the solution? We need to work with solution. Okay. I was actually asking you that question because please. In some parts of the country, I'm not so sure if that's happening in Karnataka at the moment, but specifically in UP and in Delhi, we've seen that people are struggling even to get tests done at this point. But I want to shift our focus from there and talk about the most vulnerable people in the country right now. And this is a statistic which perhaps is a common base between Karnataka and Delhi at this point. Both Karnataka and Delhi, over 45% patients and the positive people at least are coming in from the younger population. सत्येन साहब, अगर अब दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 45 से नीचे आ रहे हैं मैक्सिमम केसेस इस समय. मेरी इतनी डॉक्टर से बात होती है, वो सब बता रहे हैं कि 20 साल 30 साल के लोग इस समय आईसीयू बेड्स पर हैं. तो ये जो नया वेरिएंट है जिसकी वजह से ये सारा सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इसको फाइट आउट करने का क्या तरीका है दिल्ली के पास? ये जो नए वेरिएंट्स हैं, हमें अभी तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग क्योंकि देश में इतनी कम करते हैं, जब हमें अपना पता ही नहीं कि हमारा एनिमी कौन है, तो हम उस एनिमी से फाइट कैसे करें? ये बिल्कुल आपकी बात सही है. इस बारी जो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, यंग जनरेशन में काफ़ी दिन मिल रहा है. जो पहले था यंग लोगों को काफ़ी कम हो रहा था, इस बारी हो रहा है. तो हो क्या रहा है कि जो भी पॉपुलेशन के पार्ट्स पहले छूट गए, उन सेक्शंस में बहुत तेज़ी से फैल रहा है. जो री इन्फेक्शन है वो देखने में कम आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ लोगों को होता भी है, पर देखने में कम आ रहा है क्योंकि यंगर जनरेशन को पिछली बारी बहुत कम हुआ था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. मैं एक टेस्ट वाली बात बता दूँ, दिल्ली के अंदर टेस्ट की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. दिल्ली में डेली 1 लाख के करीब टेस्ट हम कर रहे हैं. तो दिल्ली के अंदर जो भी टेस्ट की ज़रूरत है उनको भी किए जा रहे हैं, उसके अलावा भी हम कर रहे हैं.
जो जगह जगह पर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, इस बीमारी को अगर 2 हिस्सों में बांट लें आप, पहला कि बीमारी ना हो और दूसरा अगर हो जाए तो उसका इलाज हो जाए, तो जो पहले वाला पोर्शन है वो सबको मिलके करना है। आज हम 1 साल की पूरी लड़ाई के बाद ये कह सकते हैं, अगर सभी लोग 100% मास्क लगाएं, अगर घर से बाहर निकलते हैं सब लोग मास्क लगा लें, तो बीमारी से ही बच जाएंगे, उसके बाद वाला काम तो खत्म ही हो जाएगा। पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, काफ़ी लोगों को वो कह रहे हैं कि भाई 1 साल हो गया अब मास्क नहीं लगा रहे। तो उनको देखो मास्क लगाना चाहिए, हो सकता है आप यंग हैं, आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, परंतु बीमारी लेके अपने घर आएंगे तो माता पिता को, बच्चों को हो सकता है उनको दिक्कत हो सकती है। तो सभी लोग अगर ये रूल बना लें कि 100% लोग, बस डॉक्टर अश्वनाथ नारायण से भी बात इसके बारे में पूछना चाहती हूँ ज़रा। डॉक्टर नारायण, वी आर लुकिंग at a time when we've had a year of pandemic already, right? What would you say are the biggest lessons we've learned from the first year of pandemic that needs to be applied now or should have been applied right now? See, initially when it started with pandemic, and it was the beginning. The same yardsticks should not be applied in this situation. Over the time, when we started in the previous year, when it started, see, it was we had a lot of challenges with regard to the infrastructure and facility, medicine, treatment, lab, detection. There were a lot of challenges, and more so the spread was very limited. So we wanted to contain the spread. Lot of efforts were made to contain the disease, but somehow it couldn't happen, and it has spread across the country and across the world by many sources. It has come from outside, and all these things has happened. Today's situation, we need to ensure that lives and livelihood both needs to be addressed very strongly. The management should come into the place, and we need to work much more harder to ensure that the system can address any kind of challenges. This kind of challenges needs to be addressed. This doesn't go just like that. It cannot go away. Anything can happen. See, Delhi, it's the third wave. It's not a third wave. See, here it is a second wave. See, we need to anticipate, we need to work, we need to gear up, we need to facilitate. See, we have the capacity, we have the ability, capacity, everything is there. We need to work very strongly. We need to work. We need to send a very strong message and ensure the people, the fear, we need to take them away from the fear and ensure that the first and foremost what they need to do, even if they have COVID or not COVID, regularly get tested. See, with the symptoms, the people with symptoms, I am not talking about the people without symptoms. Right. We need to test only people with symptoms. Without symptoms, we should not test them. See, it is waste of energy and time. Our tracing, when it comes to the tracing, it's okay. But when it comes to the people with symptoms only, we need to test. All the resource and the energy should be channelized only to the people with symptoms, because that is the most important. That is inflammation. That is what is progressive disease. This is where we need to intervene and treat them, get them addressed and get them whatever required treatment in the early stages. Things can be addressed very effectively. I feel this is something manageable and this is the way forward. There are a lot of challenges we need to address and work together, and we need to reach out. We need to create a lot of awareness among the people. Even with this kind of symptoms, they need to, first thing they need to do is go and get tested. And that's the objective with dialogues like these that we're doing on NDTV as well. To both of you, thank you so much for your time. Dr. Satyendra Jain as well, somebody who's a COVID survivor himself. And there is the Deputy Chief Minister of Karnataka state, which has also seen the Chief Minister fall into the trap of reinfection.